Alright, so हमने ये देखा था, we saw that in a lot of cases extreme nervousness was seen in participants. It was seen that a lot of participants went through these nervous laughters and fits when administering more powerful shocks. मतलब हम लोग जब बहुत ज़्यादा शॉक्स देने लगे थे, बहुत बड़े बड़े शॉक्स दे रहे थे above 300, we saw that participants के अंदर nervousness show हो रही थी. How did we identify nervousness in participants? Through trembling, sweating, stuttering, biting their lips, digging their nails into their flesh. These were the observations that were given to us by the researcher after the trial. In three specific situations, ये याद रखिएगा because this is very important point. In three specific situations, the participants faced uncontrollable fits, nervous fits, एंड उसके बाद सीजर्स जिसको हम कहते हैं. सो 3 सिचुएशंस के अंदर पार्टिसिपेंट्स went through uncontrollable seizures, and because of that we had to stop the research midway, this trial midway in these 3 situations, because उसको बहुत बुरा हाल हो गया था. It was a very uncontrollable situation where we had to stop the experiment so that this person can be controlled and this person can be normalized again. Let's move forward. The fits and laughters were so bizarre कि वो लोग किसी को शॉक लगा रहे हैं और शॉक लगाते लगाते वो जो है वो हंस भी रहे हैं. These were nervous laughters. This is when your nervous system does not recognize what are you supposed to do, because there's a contradictory action that you're doing that does not sit well with you. आपको जो चीज़ सिखाई गई है, that is not to hurt another person, and not to hurt another person in such a way कि उसकी जान जा सकती है. Right? You know for a fact that what I'm doing right now is not something that I want to do, but when you still do it, you basically are in contradiction, or you're in a contradiction with your own thoughts. You're in contradiction with your own values, and because of that ये जो फिट्स एंड नर्वस लाफ्टर्स थे ये बहुत ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स में वी सॉ. ठीक है. So the participant, a 46-year-old 46-year-old person, he was so seriously embarrassed by his own situation and uncontrollable behavior that we had to stop this research midway. And just like him, जो ये हमारा एक पार्टिसिपेंट है, इसकी तरह 3 पार्टिसिपेंट्स टोटल थे जिनके इस ट्रायल के अंदर वी हैड टू स्टॉप बिकॉज इनके लाफ्टर्स वर नॉट स्टॉपिंग, देयर बॉडी वाज ट्रेम्बलिंग एंड दे वेंट इनटू अ टोटल सीजर. ऑलराइट. देन वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल जो कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स स्टॉप्ड at what voltage. Let's get into that. It had been predicted that most people would not in general agree to give the shocks to another person, but this was not the case. A lot of the participants went up till 300 volts. ये याद रखिएगा. Majority of the participants 300 volts तक गए. उन्होंने पार्टिसिपेंट दूसरे जो लर्नर था उसको 300 वोल्ट्स का शॉक लगाया, एंड आफ्टर दैट पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड यूजिंग देयर राइट टू विड्रॉल एंड दे स्टॉप्ड द रिसर्च. दे लेफ्ट द रिसर्च एट मिडवे. अब हम ये देखते हैं कितने पार्टिसिपेंट्स कहाँ तक गए थे. सो 5 पार्टिसिपेंट्स went for intense shocks, that is 255 voltage से 300 volts तक. उसके बाद 8 participants went to extreme shocks, that was 315 to 360. After 360 they stopped, they said nahi we can't do this anymore. फिर 1 participant went to the danger shock, that was 375 to 420 shocks, 420 voltage जो उसका maximum था.
26 participants went to 435 till 450 votes. मतलब हमारे पास 26 participants ऐसे थे जिन्होंने stop नहीं किया. They went up till 435 to 450 votes. That means majority of our participants did not stop. जो हमने इनिशियली ये बात कही थी ना कि बिकॉज द स्टडी वॉज डिजाइंड आफ्टर लुकिंग एट द हॉलोकॉस्ट that happened, that was done by Hitler, that was done by Germans. तो इसने ये चीज़ सोची थी कि जर्मन्स ही हैं जो कि शायद डिफरेंटली वायर्ड हैं एंड दे कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दैट. दे आर द ओनली पीपल who will give a inhumane treatment to another person or hurt another person. Whereas when this will be asked of to be done by an American, this will not take place. People will not harm another person on the demand of another authority figure. तो यहाँ पे हमारा वो एम जो है वो जो हाइपोथेसिस है वो कैंसिल आउट हो जाता है. क्यों कैंसिल आउट हो रहा है जी? इसलिए कैंसिल आउट हो रहा है बिकॉज 26 पार्टिसिपेंट्स वेंट अप टिल द फुल शॉक मीटर, जहाँ तक था उतना तक. दैट इज 26 पार्टिसिपेंट ने 450 वोल्ट्स तक का शॉक दे दिया. दे अप्लाइड 435 to 450 volts of shock to the learner. Upon the command of the experimenter, each of the 40 participants went beyond the expected break-off. तो इसने एक चीज़ एक्सपेक्ट करी थी कि कोई भी हमारा पार्टिसिपेंट जो है वो एक सर्टन लेवल के बाद मना कर देगा दैट वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू. वेयर एज हमारा पार्टिसिपेंट्स, ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ऑल ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वेंट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड पॉइंट जो इसने सोचा था कि 300 से नीचे ही रहेंगे. बट 40 पार्टिसिपेंट्स थे, 40 के 40 पार्टिसिपेंट्स थे 300 वोल्ट्स एंड अबव का शॉक जो है वो अप्लाई किया. सही है जी. सो लेट्स लुक एट द कंक्लूजन ना. द कंक्लूजन क्या कहता है जी? कंक्लूजन कहता है मिलग्राम स्टडी सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओबीडियंस. सो सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओबीडियंस क्या है कि आपका शॉक जनरेटर इतना रियलिस्टिक था. द रिसर्चर वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग, वो बहुत रियलिस्टिक था. दे डिड नॉट नो कि ये रिसर्चर जो हमारे पीछे खड़ा हुआ है इज़ अ जनरल एक्टर और द रियल रिसर्चर. वो इतना फर्म और उसकी जो आउटलुक थी वो इतनी प्यारी थी, इतना जो है वो अच्छे से परफॉर्म उसने करा, इतने अच्छे से ड्रेस हुआ था दैट इट लुक्ड एज इफ दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिसर्च. एंड देन द रिसर्च वाज आल्सो डन इन येल यूनिवर्सिटी, सो दैट आल्सो पुट्स एन इम्प्रेशन दैट यू नो व्हाट, it's such a prestigious university, it is not going to conduct a research that will be unethical, or it's not going to be conducting a research that may hurt another person. So situational factor को ये support करती है research के results. क्यों क्या कहते हैं research के results कहते हैं that he identified the number of factors which could contribute to the high level of obedience. And उसमें से क्या था? Number 1, the experiment was sponsored and took place at the grounds of an institution that is very well reputed. That was Yale University. तो येल यूनिवर्सिटी में होने से हमें ये लगेगा ना एज अ पार्टिसिपेंट कि यू नो व्हाट, येल यूनिवर्सिटी जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गोइंग टू फंड समथिंग दैट इज़ अनएथिकल और इज़ गोइंग टू हर्ट अनदर पर्सन इन अ वेरी बैड वे. तो उन्होंने इस वजह से कहा कि ये सिचुएशनल फैक्टर मे हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग द पर्सन's ability to give the shock. That is, in increasing the person's obedience. Number 2, कौन सी चीज़ है जो कि must have played a role in increasing the person's obedience? Number 2, perceived legitimacy of the study. The experiment was designed to attain a worthy advancement of knowledge about learning and memory. So हमने ये बात झूठ बोली थी. We deceived our participants that this study is basically focusing on the punishment's effects on memory.
कि अगर हम किसी को पनिशमेंट देते हैं तो उसके मेमोरी पे उसका क्या असर आता है, एंड डज दैट एक्चुअली इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ आवर पर्सन, ऑफ दैट पर्सन जिसको पनिशमेंट दी जा रही है. सो ये जो लेजिटिमेसी थी, जो हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था कि व्हाट when we give punishment to a person, it increases their learning and their ability to learn वगैरह वगैरह, and that really played a very important role. So they thought, what, this is how they're going to test all of this, and it's okay, they're going to find out about memory, and they must have done their research about it, so these shocks are not really hurting the person. So that must have played a very vital role in increasing the obedience in our people. फिर क्या आ रहा है जी, फिर ये आ रहा है, द सब्जेक्ट perceived that the victim voluntarily participated in the study. Of course, उनको तो ये नहीं बात पता थी ना, the participants were not aware of the fact that the person who's receiving the shocks or the victim is our paid actor. उनको तो ये बात नहीं पता थी. उनको तो यही लग रहा था that I could have also been the learner, and because it was his fate that he has become the learner, it's not my fault, and because of that वो जो है उसको उसी तरीके से shocks देता चला गया. And the participants also said that what, he voluntarily took part. He knew that he could have become the learner, एंड लर्नर बनने के बाद आपको शॉक्स लगाए जाएंगे, ये बात उन्होंने बता दी थी. तो अगर वो चाहता तो वो पहले ही वॉक ऑफ कर जाता, बट वो वॉक ऑफ नहीं किया. दैट मीन्स इट्स हिज प्रॉब्लम एंड नॉट माई प्रॉब्लम. सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न बिकॉज ऑफ विच वी सॉ कि हमारी ओबीडियंस इतनी हाई आई है. Then the subject too has we've done this. Then certain features of the participants strengthened the participants' sense of obligation to the experimenter. He has been paid for coming to the laboratory. Now remember, हम लोगों ने starting में बात कही थी that $4.5 I think इसको दिए गए थे to take part in the study, but it was made sure, इसको clear कर दिया गया था that this money is not given to you because you have to complete the research. This is given to you because of for your time only, and if you just show up in the research and you take the money and you don't want to continue, you can leave with the money. So लेकिन giving money to another person puts an implication on you that you've taken money and you need to complete this research, and because you've taken money and that money is mine now, उनको एक unsaid जो है वो pressure होता है that what, now I've taken money from this person, I need to obey to his commands. Alright, so this was also one thing जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है हमारी obedience level इतना ज़्यादा देखने में. Then after that, from the participants' standpoint, the fact that he is the teacher and the other man is the learner is purely a chance and chance that this person had. Now this person believes that what, even I could have been the learner, and when I would have been the learner, that person may not have may not have felt pity for me and may not have had stopped the research, and because of that also शायद उन्होंने continue करा हो. सही है. Now these are all the situational factors. Last क्या है, the subjects were assured that the shock administered will not be, it will be painful, but it will not hurt or do any permanent damage to the person. So जब हमने ये अपने participants को बताया था that when you will be administering shocks, वो painful होंगे, but वो कोई permanent damage नहीं करेंगे. They will not kill the other person, they will not hurt the other person in a manner कि वो हमेशा के लिए जो है वो disabled हो जाए या कुछ इस तरह से. हम लोगों ने उनको, we assured them that this is a very controlled environment and it is not going to permanently damage the other participant. And this also could have been the reason because of which the participants did not wish to stop and they wished to continue till the entirety of our shocks. Okay जी, मिलग्रम ने हमारे पास कुछ जो है वो फाइंडिंग्स दी थी. Some findings were given to us by Milgram. People are much more obedient to destructive orders than we might expect.
ये मिलग्राम की फाइंडिंग थी. Milgram argued that the participants have learned from childhood that it is a fundamental breach of moral conduct to hurt another person against his will. Yet 26 participants abandoned this tenant in following the instructions of an authority who has no special powers to enforce his commands. हमने ये देखा कि हमारी बचपन से, because obedience is something that is instilled within us by a very young age. और जब हम इस चीज़ को इंस्टिल हो जाती है हमारे अंदर, तो हम इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं. वी आर ओबीडियंट टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम जब जॉब करने जाते हैं, वी आर ओबीडियंट ओवर देयर. वी आर टोल्ड टू डू दिस, वी आर टोल्ड टू सिट लेट, वी आर टोल्ड टू डू एक्स्ट्रा वर्क, एंड वी आर ओबीडियंट टूवर्ड्स आवर मैनेजर्स एंड आवर सुपीरियर्स. हम अपने टीचर्स के बिल्कुल जो है वो बात मान रहे होते हैं, even if we do not want to or we do not wish to continue with what they are doing or what they are telling us, but we still do it because we are instilled with the moral conduct के आपने अपने बड़ों की बात सुननी है. You have to be obedient to a person who is in a superior authority than you. तो इस वजह से हो सकता है कि हमने ये रिजल्ट्स हम लोगों को मिले. ऑलराइट.